Hello everyone, today we will be discussing next three topics from cellular injury. They are ionizing radiations, calcifications and samoma bodies. So this lecture will also be bilingual. Starting from ionizing radiation toxicity, it usually means the damage to DNA or the cellular damage because of free radical production. It can be direct as well as indirect. The complications because of ionizing radiations usually arise when the patient is exposed to significant doses, example radiotherapy, nuclear reactor accident, etc., and in certain conditions like localized inflammation and fibrosis, and also in neoplasia, example leukemia, thyroid cancer. There is acute radiation syndrome in which a person, when the whole body is exposed to high doses of radiations, it causes severe symptoms like nausea, vomiting, diarrhea, hair loss, erythema, cytopenias, headache, and altered mental status. Stem cells of some rapidly regenerating tissues are most susceptible to radiation injury. These usually include cells from skin, bone marrow, GI tract, and gonads. Radiotherapy damages the cancer cells more than healthy cells because cancer cells have dysfunctional DNA repair mechanism in addition to high replicative rates. आयनाइजिंग रेडिएशन टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से डीएनए या फिर सेलुलर डैमेज होता है. ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है और यूजुअली प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है. कॉम्प्लिकेशंस तब आती हैं जब पेशेंट एक्सपोज होता है सिग्निफिकेंट डोजेस से, एग्जाम्पल रेडियोथेरेपी, न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सीडेंट्स, ये सब. और यूजुअली कुछ कंडीशंस में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जैसे कि लोकलाइज इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस, एंड न्यूप्लेशिया के एग्जाम्पल्स लाइक ल्यूकीमिया एंड थायराइड कैंसर. एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जिसमें जब पर्सन की होल बॉडी एक्सपोज होती है हाई डोजेस ऑफ रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन में, तब नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया, हेयर लॉस, एरिदमा, साइटोपिनिया, हेडेक और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस जैसे सिम्टम्स आते हैं. स्टेम सेल्स जो कि बहुत रैपिडली रीजनरेटिंग टिश्यूज में होती हैं जैसे कि स्किन, बोन मैरो, जीआई ट्रैक्ट, गोनाड्स, इन सब के सेल्स मोस्ट ससेप्टेबल होती हैं रेडिएशन इंजरी के. रेडियोथेरेपी जो होता है वो यूजुअली कैंसर सेल्स को ज़्यादा डैमेज करता है मोर देन हेल्दी सेल्स, क्योंकि कैंसर सेल्स में हाई रेप्लिकेटिव रेट्स तो होता ही है, बट उनमें जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होता है वो भी डिसफंक्शनल होता है. नाउ कमिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन. There are two types, dystrophic and metastatic. And calcification is the deposition of calcium, so it will appear basophilic, deeply basophilic on H&E stain. This is how the basophilic or bluish or purplish color appears on H&E stain. So differentiating between dystrophic and metastatic calcification on basis of calcium deposition. In dystrophic calcification, it is diseased or abnormal tissues, whereas in metastatic calcification, it is in normal tissues. The extent in dystrophic tissue is localized, example calcific aortic stenosis, and in metastatic calcification, it's widespread, which is diffused or metastatic. Then some conditions that are associated with dystrophic calcification are TB in lung or pericardium, then other granulomatous infections, liquefactive necrosis of chronic abscess, fat necrosis, infarcts, thrombi, schistosomiasis, congenital CMV, toxoplasmosis, rubella, samoma bodies, CREST syndrome, atherosclerotic plaques can also become calcified. Whereas in metastatic calcification, it is usually seen in interstitial tissues of kidney, lung, and gastric mucosa. Because these tissues lose acid quickly, so the pH will become increased, and this favors the calcium deposition. In the nephrocalcinosis of collecting duct, it may lead to nephrogenic diabetes, insipidus, and renal failure. Etiology of dystrophic calcification is secondary to injury or necrosis, whereas the etiology of metastatic calcification is secondary to hyperphosphatemia or hypercalcemia. Hyperphosphatemia is seen in chronic kidney disease, whereas hypercalcemia is seen
in primary hyperparathyroidism, sarcoidosis, and hypervitaminosis D. ओके, सो बेसिकली टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन, दो तरीके के कैल्सिफिकेशन होते हैं, डायस्ट्रॉफिक एंड मेटास्टैटिक। कैल्शियम जब डिपॉजिट होता है तो वो डीपली बेसोफिलिक दिखता है एच स्टेन पे। ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है जहाँ पे एच स्टेन में वो कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से ब्लूइश या पर्पलिश कलर में दिखता है। अब डायस्ट्रॉफिक और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन डिफरेंस देखेंगे। बेस्ड ऑन कैल्शियम डिपोजिशन ये एबनॉर्मल टिश्यूज में होता है, डिजीज टिश्यू में डायस्ट्रॉफिक होता है, और हम इसको याद कर सकते हैं डायस्ट्रॉफिक फ्रॉम डी, डिजीज्ड फ्रॉम डी। देन मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन यूजुअली नॉर्मल टिश्यूज में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। डायस्ट्रॉफिक का एक्सटेंट है लोकलाइज्ड, एग्जाम्पल है कैल्सिफिक एओर्टिक स्टेनोसिस, और मेटास्टैटिक का एक्सटेंट वाइड स्प्रेड होता है जैसे कि डिफ्यूज, मेटास्टैटिक, ये सब। देन डायस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की कंडीशंस हैं टीबी, ये लंग और पेरिकार्डियम दोनों में हो सकता है, और ग्रैनुलोमैटस इन्फेक्शन हो सकता है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस ऑफ क्रॉनिक एब्सेस, फैट नेक्रोसिस, इन्फार्क्ट्स, थ्रोम्बाई, सिस्टोसोमियासिस, कंजेनिटल सीएमवी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, समोआ बॉडीज, क्रेस्ट सिंड्रोम, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स, ये भी कैल्सिफाइड हो सकते हैं। जबकि मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में यूजुअली कंडीशंस रिलेट होती हैं किडनी, लंग और गैस्ट्रिक म्यूकोसा से, क्योंकि ये जल्दी एसिड लूज करते हैं और इस वजह से उनका पीएच इंक्रीज हो जाता है, जो कि कैल्शियम डिपोजिशन को फेवर करता है। नेफ्रोकैल्सिनोसिस कलेक्टिंग डक्ट में होता है, जिसकी वजह से नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, या फिर रीनल फेलियर भी हो सकता है। एटियोलॉजी, डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है सेकेंडरी टू इंजरी और नेक्रोसिस, और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन की एटियोलॉजी है सेकेंडरी टू हाइपरफॉस्फेटीमिया, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज में होता है, और हाइपरकैल्सीमिया से भी हो सकता है जो कि प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में होता है, सार्कोइडोसिस, और हाइपरविटामिनोसिस डी में होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज समोआ बॉडीज। दे आर concentrically laminated calcified spherules like this as shown in this image, and they are usually seen in certain types of tumors. Those tumors are written over here, and we can learn it from a mnemonic: Somoma bodies. So from P, it's papillary carcinoma of thyroid gland and kidney. From So, it is somatostatinoma. From M, it is meningioma. From another M, it's mesothelioma. Then from O, it is ovarian serous papillary cyst adenocarcinoma. From the third M, it's milk or prolactinoma. And then from the B, it's the basophilic staining of calcium deposits within the tissue. So basically, समोमा बॉडीज जो होती हैं वो कैल्सिफाइड स्फेर्यूल्स होते हैं जो कि कंसेंट्रिक दिखते हैं। अपीयरेंस कुछ ऐसा होता है कंसेंट्रिक। इसको हम लर्न कर सकते हैं इस नेम के थ्रू, समोमा बॉडीज। पी से है पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड किडनी। एस से है सोमैटोस्टैटिनोमा। एम से मेनिंजियोमा। दूसरे एम से मेसोथेलियोमा। देन ओ इज फॉर ओवेरियन सेरस पैपिलरी सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा। देन फ्रॉम द थर्ड एम हम लिखते हैं मिल्क यानी कि प्रोलैक्टिनोमा। एंड देन फ्रॉम द लास्ट बी, बेसोफिलिक स्टेनिंग कैल्शियम डिपोजिट की टिश्यू के अंदर।